بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear students, hope you are good and safe at your homes. Welcome to this online computer class. Our today's topic is main parts of computer from page number 13 and 14 of book. In our today's lesson, we will discuss about the main parts of a computer. So let's start our today's lesson. Parts of a computer. As our body is made up of different parts, a computer is also made up of different parts. جیسے ہمارا جسم مختلف حصوں سے مل کر بنا ہے، بالکل اسی طرح کمپیوٹر بھی بہت سے حصوں سے مل کر بنا ہے. And a computer has 4 main parts. اور کمپیوٹر کے 4 مین پارٹس ہیں، 4 اہم حصے ہیں جن کے نام یہ ہیں: مونیٹر، سی پی یو، کی بورڈ اور ماؤس. So let's discuss each part one by one. And first of all, we are going to discuss about monitor. A monitor looks like a TV screen. Monitor TV کی طرح دکھائی دیتا ہے. You can see cartoons, films, words, numbers and sentences on a monitor. آپ مونیٹر پہ کارٹونس، فلمس، ورڈس، نمبرس اور سینٹنسز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. مونیٹر از آلسو کالڈ اے ویژول ڈسپلے یونٹ، VDU. مونیٹر کو ویژول ڈسپلے یونٹ بھی کہا جاتا ہے اینڈ اٹس شارٹ فارم از VDU، اور اسے مختصراً طور پر VDU بھی کہا جاتا ہے. And now we are going to discuss about another important part of computer, which is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. It is the brain of a computer. یہ کمپیوٹر کا دماغ ہے. You think with your brain and a computer thinks with its CPU. جیسے آپ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، بالکل اسی طرح کمپیوٹر اپنے CPU کی مدد سے سوچتا ہے. CPU controls all the functions of a computer. CPU کمپیوٹر کے تمام فنکشنز کو، تمام کاموں کو کنٹرول کرتا ہے. It also stores lots of information for you. کمپیوٹر آپ کے لیے اپنے CPU میں بہت سی معلومات کو محفوظ کرتا ہے، اسٹور کرتا ہے. اور یہ کمپیوٹر کا ایک بہت اہم حصہ ہے. And now we are going to discuss about keyboard. A keyboard has alphabet keys, number keys and special function keys. اگر آپ کی بورڈ کو دیکھیں تو کی بورڈ پر مختلف قسم کے بٹنز ہوتے ہیں
जिन्हें कीज़ कहा जाता है। और ये कीज़ जो हैं ये अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, ये नंबर कीज़ भी होती हैं और इनमें स्पेशल फंक्शन कीज़ भी शामिल हैं। When you press the key, the same letter character is seen on the monitor. जब भी आप कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कोई भी बटन, कोई भी की प्रेस करते हैं, तो वो सेम की जो आपने प्रेस की है कीबोर्ड से, वो आपको स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पर दिखाई देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कीबोर्ड से ए की को जो है वो प्रेस करते हैं, अल्फ़ाबेट की को, तो आपको रिज़ल्ट में कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे ए जो है वो नज़र आएगा। And now we are going to discuss about mouse. A mouse is a pointing device. एक माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कंप्यूटर पर मौजूद आइकन्स को हम स्क्रीन पे अगर हमने पॉइंट करना है तो हम माउस की मदद लेते हैं। It has a long wire attached to the CPU. इसके साथ एक लंबी तार होती है जो कि CPU से अटैच्ड होती है। It has two buttons and a scroll wheel. जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि माउस पर दो बटन्स होते हैं, यानी राइट बटन एंड लेफ्ट बटन, और सेंटर में एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ एरो ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो एरो जो पॉइंटर मूव कर रहा होता है उसे बेसिकली आपका माउस ही कंट्रोल करता है। It helps you to draw and make the work easy on a computer. माउस की मदद से आप कंप्यूटर पर कोई भी काम बआसानी कर सकते हैं और ये ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए भी आपकी हेल्प करता है। A mouse should be kept on a mouse pad. माउस को हमेशा एक माउस पैड पर रखना चाहिए as it moves well on smooth surface. क्योंकि जब आप एक माउस को माउस पैड पर रख के काम करते हैं, उसे मूव करते हैं, तो आपका माउस ईज़िली स्मूथली मूव करता है, क्योंकि सरफेस स्मूथ होने की वजह से माउस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती मूवमेंट में। Dear students, hope you understood today's lesson. Now let's move on to today's homework. And here are some key terms from unit number 2, and number 1 is VDU. VDU stands for Visual Display Unit. And number 2 is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. Number 3 is printer. Prints your work on paper. Number 4 is speaker. Speaker is used to hear sound or music. Number 5 is microphone. Microphone is used to record sound. Number 6 is UPS. UPS stands for Uninterrupted Power Supply. And number 7 is compact disc. CD, which is compact disc. Dear students, you have to learn and write these key terms in your notebooks. Here are some questions for you students, and question number 1 is, what are the 4 main parts of a computer? And the answer is number 1, monitor. Number 2 is CPU. Number 3 is keyboard. And number 4 is mouse.
Question number 2 is define monitor. And the answer is a monitor looks like a TV screen. It is used to see cartoons, movies, or whatever you type. Question number 3 is define CPU. And the answer is CPU stands for Central Processing Unit. It is the brain of a computer. Question number 4 is define keyboard. And the answer is a keyboard has alphabet keys, number keys, and special function keys. It is used to type information. Question number 5 is define mouse. And the answer is a mouse is a pointing device. It has a long wire attached to the CPU. Dear students, you have to learn and write these questions in your notebooks. Hope you understood today's lesson. Thank you. Allah Hafiz.